ये कैसा समाधान यात्रा, एम्बुलेंस का सायरन बजता रहा, मरीज की जान खतरे में रहा। रोहतास से आ रही रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार संचार न्यूज। बिहार के रोहतास में सीएम नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के लिए काफिले के साथ पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके काफिले को लेकर सासाराम आरा पथ को लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक के लिए सासाराम के मोकर के पास बंद करके रखा गया, जिस कारण घंटों सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। बड़ी बात यह है कि इस दौरान एक एम्बुलेंस भी ब्रेन हैमरेज की एक महिला मरीज को लेकर फंसी रही, लेकिन किसी ने उसे निकालने की जहमत नहीं उठाई। बता दें कि नौखा से सासाराम की ओर एक मरीज को लेकर एम्बुलेंस जा रही थी, जिसे मोकर गांव के पास रोक दिया गया, जिस कारण घंटों मरीज परेशान रहा। वहीं मरीज के परिजन भी परेशान दिखे। एम्बुलेंस का सायरन बजता रहा, लेकिन किसी भी अधिकारी या पुलिस कर्मी ने उसे निकालने की कोशिश नहीं की। वीडियो में देखा जा सकता है कि लगातार एम्बुलेंस का सायरन लगातार बज रहा है। फिर बाद में स्थानीय लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, तब भी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया। बाद में जब सीएम का काफिला गुजर गया, उसके बाद एम्बुलेंस को जाने दिया गया, जिस कारण मरीज की जान खतरे में पड़ी रही। बता दें कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोककर भी एम्बुलेंस को पार कराया जाता है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने अपनी मनमानी पूर्ण रवैया के कारण एक मरीज की जान खतरे में डाल दी। रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कितने देर से जाम में फंसे हैं? मैं सीरियस है इनकी। क्या जाने नहीं दे रहे हैं आप लोगों को? नहीं जाने दे रहे हैं।